Good evening, both. Uh, this is Arpan, and before starting the demo, can I have a quick introduction of you both? Just what you're doing and what is your background and all, if you're working or not. Okay. Hello. So, sir, Yeah. my name is Lakshman and I am working as a senior payroll processor Mm-hmm. in Bechtel. Okay. So, it's been around more than 6 years. I have more than 6 years experience, but in Bechtel, it's been around 3 years. Mm-hmm. So, in Bechtel, I'm using SAP HCM as an end user for Oh, our daily activity. okay. Great. Great. And Gautam. Yeah, myself is Gautam, and I am working as a payroll manager in the TTM Info Service Private Limited. And I have Mm-hmm. never worked in the SAP SCM part, and I am Mm-hmm. using a customized tools for the HRMS. It's a Ascent Okay. HRMS. Great. 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 Okay then. So this is Arpan Gaur. I have around let me just share my screen. I have around 5+ years of experience in SAP HCM as well as 3+ years of experience in success factors. You both are from for SAP HCM and success factors demo, right? Yes, sir, basically for success factor. Okay, basically for success factor and SAP HCM as well. Uh, I'm not sure about SAP HCM right now, but we'll check it. For SAP HCM or success factors, Both. both. Yes. So fine. So just let me have a quick introduction demo of SAP HCM. And so you guys are aware of that the HCM processes are there and all everything. So there will be not much challenges for you to learn get into the SAP HCM as well as success factors. So No, actually, hmm, he is aware that he is aware that he is working in the I never worked, and I don't have any ideas regarding the activity. oh, okay. Introduce about SAP. What SAP stands for is systems, applications, and products in data processing. So before coming to SAP, it is a product of ERP. ERP stands for Enterprise Resource Planning. ERP basically focuses on the available resources or any products, resources to utilize in such a way, to plan in such a way so that it will contribute to the company's and organization's outcome. So this is the ERP. Basically, the main focus of ERP to meet the organizational goal with small goals like department goals. For example, HR department will have their own goals, finance department will have their own goals. So ERP, the main function of ERP and the main what we say, the main goal of ERP is to contribute these small goals and make it as a overall goal for an organization so that the organization can achieve the desired output with the limited resources, with the limited budget, and the productivity the high. The main goal of ERP is the same. So SAP is the ERP solution. So in ERP, you'll be having different softwares like Oracle. In Oracle, you'll be having Oracle Finance, HR, likewise PeopleSoft. And right now, the most trending is SAP. And SuccessFactors is also a product of SAP. So SAP is the integrated system. Every department, which will call as modules, are integrated with each other and produce a desired output. So this is what the SAP does. Basically, it's systems, applications, and data processing. Means for the processing of the data, you require a system in place, and applications and products nothing but modules with HR, finance, departments which you are dealing with, and utilizing the best use in a single system for the data processing. So each department has their own goal. Each module has their own goal. So that's the main function of the SAP to contribute to the desired outcome for the organization. Okay. So what are the different modules in SAP? SAP is not only focusing more about a single module, like I told about HR
and I've told about finance. Each module has their own part, but the system is only one. But in the one system, you'll be having different modules integrated with each other. At the end of the day, management wants a output and desired reports from the system, which SAP fulfill basically. At the end of the day, company basically needs the reports, right? So different modules are here considered as a different departments. Especially SAP will have the functional modules. Let us first discuss about the functional modules and then technical modules. So under modules, you'll be having finance and controlling, which finance department will be handling. For the finance, will be using mostly finance module. And then human resource, like maintaining the master data, payroll, processing the payroll, and maintaining the time related details, all this capturing, basically data entry and all the users will be doing, which SAP HR will be filling. And for the ease of the user to maintain the data in a single screen, in a single system, in a single server, so there will be no chance of misplacing of the data. So ultimately, at the end of the day, what we require is the reports and the data will be accurate. So SAP fulfill the requirement in such a way. So you will be having finance, controlling, sales and distribution, where there is a sales service and distribution. There is a different model which will be calling SD. You will be having material management as well, and then production security. But among all these modules, the trending is FICO and HR, as finance and HR are the backbone of any business. HR, without HR resource, without managing of the human data, without processing of payroll and all, you can't able to, the resources itself will not get motivated and work towards that. So HR organization, HR and finance are the must modules, means not exactly must. If there is a not scope of much in HR module, like only if they are dealing with marketing or something like consultant work, not much of human population, they may they may handle a cost efficient or simple budgeting software, which will be getting other than SAP in ERP solutions. So based on the requirement, what is the most trending requirement in the organization? If there are more number of people, if there are more number of staffs in the organization, and the more focus is about the human resource, then you'll be having, they will be purchasing, company will be using HR module. And if simultaneously, if there are many transactions like billing and all, which will be simultaneously going on in the organization, so much need of FICO, right? Finance and controlling basically. So you'll be opting for FICO modules. So not necessary that you'll be having or purchasing all the modules basically. It is not required that the organization, if they are not concentrating on market perspective, so they should avoid the marketing management. So it is not necessary for the organization to purchase those modules. So it is the client decision. See here, it is ultimately the client decision whether to decide to buy all the modules or specific module based on their requirement. So previously they may be using Tally software, and they may be updating the records in details in the, just to avoid all those bits and pieces of work. SAP have provided a software in which the process doesn't change. HR process, what HR process involved right from the employee has been terminated, right? All the activities, promotions, action, step configuration, the HR processes doesn't change. What you do in the traditional HR system, HRIS system, that same is included in the SAP HR with little bit different terminology that will be going to focus. So ultimately is the client decision whether to do single module or multiple modules. So let me just make you understand the function difference between functional and technical module quickly. So what is functional module basically? Functional module, generally the person who are opting for functional module, they'll be having the background of HR or finance, but it's not necessary that. I have seen many BTech people will be having opting for functional module. The only thing is to understand the process basically, what exactly the
process, what finance team will be doing, what is exactly the finance process, what is the exactly the functional process. If you have the basic knowledge of this process, it will be easy to cope up with certain modules. So generally, majorly, the educational background from HR or finance are opting the same kind of module, like MBA finance will be opting SAP FICO, MBA HR will be opting SAP HCM. So likewise, this is a functional module in which HR, finance are most trending nowadays. And then technical consultant is basically, you do any functional module have to interact once in their tenure with the technical person, because SAP provides the standard standard and configuration software, all the related configuration. But wherever any enhancement is needed or any development is needed, for example, there is a standard report which are already predefined in the SAP HR for organizational management. You may have personal administrative query will be having, the details of the employees. But in case the customer wants a separate report where only first name, last name, department name, only CTC, other fields they don't want to search. They just with the click button, execute button, they want to extract those report, any enhancement, any kind of, not only report, any kind of enhancement which is not their standard system. In the standard system, those things are taken by ABAP consultant. So if at all any functional, for example, SAP HR related report requirement will come to me, then for the initial interaction with the client will be the HR consultant, means HR consultant will be interacting and passing out on the logic, basically how to extract, from where those fields are to be extracted. All these logic are to be explained to SAP technical team. Nothing but based on our explanation, the ABAP consultant will start working. Not only those, if any fields are to be created, anything, if it is required, all these things are done by the in any info type. Info type is nothing but information type, details of functional information, basic pay, salary details are captured. Okay. So if any enhance required in the area of the respective module, the respective module consultant will be interacting with the client and sending that to the ABAPer based on the approval of the management. ABAPer will not only work with HR, he will work with other modules like finance, marketing, etc. So this is the role of technical consultant. And then you will be having SAP administrative. What is administrative? Means SAP HR will be only authorized to only SAP HR related are only authorized, their authorization given to their role basically. But who will be giving them the authorization is the basis administration. Basis administrator is the SAP basis consultant is the only person who is be having SAP overall access, and based on the organizational approval or based on the organizational requirement, they will be giving the respective access to the consultant like us, SAP HR, SAP Finance, etc. So this is all about different type of consultants. So any doubts till now or any confusion? No, no, not yet. Okay. So then they here unlike if you are all for success factors as well. So unlike success factors, you'll be having SAP is having a server which will be calling at us as a PaaS, platform as a service. Basically, success factors is software as a service that I'll explain you after this. So basically, you will be getting into the server and logging in. There is a server which will be provided to you by the basis team. The credentials and all this logout that link is also provided with the basis team, or you can install it, download the installation latest version from these credentials.
These credentials are specially provided to you by the basis team. Okay. System, the main important thing is application server and instance number. That's it. The main important thing is this. These credentials are provided to you by the basis team, and based on that you have to log on into the credentials. Once you log on, this is the log on page. If suppose this I have three systems here, you will be having development, quality and production for a single client. I will explain you what are those system landscape in just now. But if you log on to any of this client, basically this is the fixed number, don't change anything. Client will be of 3 digits. This is the fixed number. What you have to do is you have to enter the username and password. So this is the easy access screen which will be open to generally end users will be using this screen. So this is the easy access screen. I will cover that later now. So this is how once you log in, initial login, when you are using initial login password, then the temporary, that is a temporary password. Then the system will prompt you to change the password. After you change this, you will be finding this screen, easy access screen, from where you can navigate, from where generally HR will be navigating. Like if you are having end user experience, if I want to run the payroll in India, I'll be going in the human resources and then SAP payroll, and then India comes under Asia Pacific, and then I'll be running the India. So payroll accounting, just if I want to, before releasing the payroll, if I want simulation run, means test run, generally if you just click the simulation run, this test runs will automatically click. Else you can even go start payroll, mention the test run here, and you can even run the payroll. Anything you can do. This is the simulation run. So just the navigation steps we will be using. So next is, let me just, before coming here, let me just quickly complete the system landscape. So as I told you now, the server is under which you will be having HR related details and finance related details. This is just HR related details we are focusing. In the same server, you'll be having to go into the accounting and do the finance and billing activities, and logistic MM related thing you'll be doing over here. So various modules you'll be having in a single system. That's the main focus of the SAP. Now let me system landscape. So what is the system landscape basically? System landscape, this is the server which we are logging in. So similarly, system landscape will be having development, quality and production server. For this you will be having one client name, but each client name will be different, client ID will be different as a name. But why we are having these three servers? The reason is, in the production server only end users will be operating. We as a consultant should not touch production server until and unless required. Configuration is not restricted. I'm working in TCS. Even if I go in production server and go to my configuration, it is simply restricted. Editing of any configuration of any process is restricted in production server. If you wanted also, you can't configure anything in production server. But the config, when you are providing, if you are in a support project, you will be getting ticket that you need to create a personal area or a personal area or any location or any org structure. So organizational related configuration, number ranges configuration. So also, if you are in implementation project also, whenever you get the requirement, all those configuration will be done in development server. When you are in implementation project, at the first day itself, you will be not allowed to configure anything, even in development server. You will be having a business blueprint which will be provided to you by the client. Means you have to prepare it. Ultimately, the process will be provided to you by the client. So in your own terminology, like
client will provide in their own terminology or to prepare that document terminology. Like, but I am having the offices in Mumbai, Pune, and in international India, Mumbai, Pune, I am having offices, and the United States, some Oklahoma, I am having offices. So based on that, you decide area and personal sub area. Personal area is nothing but location. I will come on that. That comes under basically. So personal area, personal sub area, that you have to configure. You have to put it into the SAP terminology. So that is called the business blueprint. Once the process is being prepared and the business blueprint is ready and signed off by the customer, then only you are required to configure, only for implementation. But for support and other projects, no need, already the system is configured, but it is ticket based. Generally, anywhere in big organization, it is ticket based. The client will be raising tickets and you will be getting the ticket under various software, which your company will be using. Based on the ticket, you have to work on the configuration what is required. So whatever, whether it is implementation or support, the my only concern is what is development server is when you are configuring the system, SAP HR related processes. When you are configuring, so you will be configuring that first in development server. That is configuring development server. Then you may be asked how you it will be moved to production server. Though if you are configuring in development server, you will be not allowed to configure in quality server also and in production server also. A quality server can be named as pre-production. In my office, it is pre-production instead of quality server. So, but that is generally in actual terminology is quality server only. But when you configure anything in development server, configuration will be one TR will be called transport request. That number, TR number, you have to capture under same TR. If you are configuring in a one go, for example, personal area, sub area, you can configure in the same TR. That while practicing, you'll be getting that transport request number. You have to keep it with yourself and you have to provide it to the basis team. Basis team, after everything is configured in development server, the first testing doing is the unit testing. After the unit testing is passed, then the TR number you will be providing it to the basis team. The basis team will be moving because that configuration, whatever configuration you are doing, if you are doing 5 to 10 configurations, you can use only one TR, not necessary that each configuration, each transport request number you will be using. Under the same number only you will be getting only at once you will be creating the TR. That is very simple. One create icon will be there, you the terminology will be there. You have to mention the terminology, TR number will automatically generate. So once the TR number is generated, then the transport request you have to provide to the uh, basis team. So basis team will be, after testing, unit testing, basis team will be moving the same in quality server. Quality server, the client will test. Basically, end user will test from the client, whoever the testing team is there from the client, they will be testing in the quality server. So if the client is satisfied, then the client will confirm through mail. Everything should be documented in real time. You have to, they can sign off from the mail. It should be in a written format. If the client is not satisfied, he will respond that this particular thing is not working, get it rectified. Then after rectifying this under the quality server, again the test, and if he or she is satisfied, then you have to take their approval through mail, whether it is satisfied, whether I can move the same to the production server. Then the transport request which we have created in development server, the same TR is moved to quality server and the same TR will be moved to production server. So in the production server, when the data is moved, there will be no configuration done later. Again, if any mismatch happen, you have the client have to raise the separate ticket. Then they will be doing settings, configurations, etc. in the development server. So the process of moving from development to quality and the quality to
production server for transport management system. TR, transport request is generated. The process of transport request from development quality to production is transport management system. And when it is the data is in production system, then your project is said to be go live. This is what the system landscape. Basically, it has three servers basically. Okay, got it? Or any doubts? No. Okay. So when it comes to the SAP HCM, the what is basically SAP HCM module, which will be covering. SAP HCM module basically will be having the same. It is not no more different than the normal HR processes, but the normal HR processes you will be hiring employee and their details will be captured somewhere else in the Excel sheet or any other details, or if you're using specific only one software only for HR, but your management but company wants different softwares, other softwares which combines all these modules, HR, finance and all. So basically normal process which you are doing, hiring an employee, recruiting an employee, process management, compensation handling payroll, all this process, if we keep in the software, the process will be same. The only thing difference is we are keeping in the SAP terminology. We are processing in the SAP terminology, the same process. We keep in a system and the system will process its process as per the requirement. The configuration we have to do as per requirement. That is SAP. If we are talking about SAP HCM, if you right from the evaluating from one's performance, managing promotions, compensation, handling payroll, basically in a single system, where you don't need to depend on any other system. That is the main of SAP HCM module, or everything will be in a single module. So when it comes to the SAP HCM module, the main goal of the SAP HCM is high efficiency with the low cost. Means if typical organization will be using for payroll, they will be using some third party software. For maintaining data, they are using other software. For finance related, they are using other process. So basically, instead of avoiding all this, if they purchase the SAP and the related module, cost efficiency for the organization rather than dependency on the other softwares. So that's the main objective and the main goal of the SAP, to do the high efficiency with the low cost. In the SAP HCM are this personal administration, organizational management, time management, payroll. To elaborate the other in detail, personal administration. What is personal administration? Personal administration is nothing but the term personal itself is related to a person or employee. So whenever employee related detaching, that will be covering in personal administration, and the configuration that is needed by the user to maintain the data in the front end with less what we say, less efforts and hassle free. So that work will be consultant. They will be laying down the platform. For example, if you want to hire any employee, you have to go to this. Let me just take you through the screen. Once I have to hire the employee as a user, I'll be going to human resource, and then under that I'll be going to personal management. In admin only, personal admin only, you'll be hiring the employee, and then HR master data. Hiring is an action in SAP. So personal action, I'll be just selecting. These are the actions: hiring, change of position. Initially, at the time of implementation, this all will be blank. These all actions are configured by us. Under that action, what are the info types are to be used? Those are called info group. For example, if I want to maintain a single employee, then this is the action. This is where we'll be going and hiring the employee. But
want to go in detail with this navigation part and you want to click here for hiring an employee, the action name is PA40. You can just go to PA40 directly, the same screen will be visible to you. But if you want to see what are the transaction codes associated with this, basically actions, maintain of master data, anything, then you can go to extra settings, display technical names. Now, if you go to the navigation path like human resource, personal management, administration, HR master data, you'll be getting the transaction codes of this. In this, majorly we'll be using this PA40 for hiring, maintenance, maintain of master data, PA20 only for display. This is just a personal file, just before entering into this, only basic details of the information if I want to view of the about the employee is this. Generally in real time this will be not of use because everything will be covered in this three. So if I want to maintain the master data, this is the PA30. This is the personal number. If I don't know the number but I know the name of the employee, I'll be searching the name. If the employee name is Anil, I don't know if any Anil name is there. See, I can able to find out. If just after the name Anil, keep start mark. If the name, if the first name continues with Anil Roy, Anil Shikhar Reddy or something first name, then if it starts with Anil but more than Anil that name is there, then you have to mention star and you can just search with this. So this is the person which will be going. Just check whether the name is matching or not. There is only one person which name starts from Anil. So this is how in personal number you can search the employee whose name you want to search. So after that, here these are the info types. These all configuration will be done by us. In our session we'll be covering all these configuration. These are called info type menus. So if I want, I can just want three menus. This is a menu. Under this items in the menu, which is info type, information type. Information type is nothing but a single screen. All the employee that related information to the employees captured in the single same screen, like personal data, only personal related information, addresses, only address related information. This you have to configure it in order to view the employee. But in order, if this is also not configured, if you want to check the info types, actually what you want to update, these are the various info types. Not all are in human info types over here. Only hardly will be using 14 to 15. Generally, based on the requirement, country specific requirement, those info types will be using. So this starting 16 info type we can use. Then if this is related to travel, if not, monitoring of task is also used, family members in dependency, education, from here it is country specific. Basically statistics also we can use. So based on the requirement we can use, but not all. Like GB is Great Britain, other countries, capturing any loan, you will be using this loan info type which comes under payroll. So these are the various info types that we'll be covering. Hardly will be using, hardly in real time we'll be using 16 to 20 info types, not more than that. Other are major info types are country specific. Based on the requirement only we have to use. So this configuration and number in these configurations, TCS is there. TCS 8 series should start. So how to configure this number will be covering in personal administration and maintaining of master data, info type related configuration. If I want to add anything like personal data, may I want to add any values in the gender or remove all these unnecessary values, all these info type related configurations will be covering in personal So, administration. Arpan, Yeah. can you show me the screen where we can make changes? Backend screen. uh okay, you can do the changes in SPRO.
This is the configuration that you can do. I can just show you sample, not complete. mm, mm, Here, if I want to configure any info type related, it uh, comes under personal management. Here under personal management, you'll be having personal administration. Okay. yes, yes. So this personal administration, if I want to, these are the various info type. Organizational data means organizational Mm, assignment. Now personal data, if I want to configure this, here under personal data, I'll be configuring personal data related information like form of address. Basically that Mr. and all that title is there, no, that will come in form of address. mm, Want to see that, if I go to PA30 under here, this, though the name is title, but the technical name will be form of address. If I just go to press F1, you will be finding this technical information, this form of address text. So don't go with that name. These are the standards anyways title with by SAP. But if you want to know the technical name of the field, basically that is form F1. of You address. have to just press F1, form of address. So if I just click on form of address, I can create various. These are the various Okay, values which we have seen, right? That we have which we created. have seen in drop down. We can add or remove. Yeah, you can add or remove this all configuration, which will be covering So in. we can select. We have, already we have like system is giving us 20-25 options, or we can add in a custom way. It's a No, new entity. no, a system will give you standard. These all are custom created. System will give you standard with Mrs. Yes, yes. Basic Out of value. which we can select or we can just. Yeah, you can select, or if you don't want, you can even remove it. Remove it means you. This is the delete button. You can just remove any value if you don't want. So And you same want, goes with info types also, yeah, and same goes with info types. yeah, same goes with info type. Whatever you changes. Like in India, we have a fixed kind of 580 series kind of info types for Indian payroll. Yes, yes, 581, 582, 583. yeah. But can we custom any info types? Beyond that, can we custom any info type beyond that if required? Yeah, custom info types will be again configured by ABAPers. ABAP team will be configuring any custom related info type. If at all So, you're, yeah. so like we have info type called SC05. It's a Mhm, closing balance for sick leave, right? mhm. Yes. So is that mandatory that we have to use SC05, or we can give any name to this info type, or is that system generated one? No, no, this is the system generated one. If at all you want to go ahead with the custom info type, if you don't find this with the custom fields and custom info type, that will start with 9 series, 9000 series, 9000 till 9999. That will be again done by ABAPers. So you can't change any text of the info types. These are the standards. Okay. So what is our role here? Means how just just designing this Just design display. means basically personal administration, info type configuration. Right now, I've told you sample personal data may under that drop down what is configured, and then you'll be having info group. Same screen, in the same screen, you will be going to configuration under customizing procedures. Okay, here you will be configuring info type menus, which you can able to see in PA30 screen. This is nothing but info type menu. These are not by default. This we will only configure as per the requirement. So Okay. so means we have enough data at the back end. We just Mhm. have to select as per our client requirement, Yeah, you right? already We pre-configured have there. to select from menus, you can say. Yeah, you have to select from the menus basically. Configuration will be done by SAP based on the Hmm. general We requirement. can't create any new one. It's a Yeah, you can't developer. create a new one. If any new info types is to be created, you have to work with the developer, and you have to give this name. For example, suppose reporting is there, or you want any other
custom reports you want to give the logic to the developer. For example, this is the field, Mm-hmm. so you have to Means go we to have to give our F1. input to F1, to yes, add some new process, or you can say some new info type. exactly. This field name, this technical field name, if you go to technical information F1, this field Mhm. name, if you give it to the developer, they'll be working on the same. So have you ever heard about this role, payroll change controller? Payroll, Change control. payroll change controller means control record. No, no, it's kind of designation, not payroll change controller, just change controller. It's means what in SAP you are talking about? It's a kind of designation Okay. in some companies. The Mm-hmm. role is like to support end user, or you can say to support payroll processor or HR operation Mm-hmm. employees Okay. if they are if they are facing any kind of error in their reports. Mm. So in this kind of uh, means change controller, then he will help from kind of production system. I think they have access of production. They have access only of production. Production, I think, yes. Yeah, and if you are talking about end user payroll user, then they will be having access on production only. No, no, So production the maintenance. role I working, think yeah, production. production is kind of end user, but called, I don't know, but maintenance, or I don't think so. So they can check, means our error, or they can rectify it from backend also. Mm-hmm. Backend rectification means you have to have this access PRO. Whatever the error is there, you have to go under this payroll module, and whichever country you are supporting, you have to go over here. For example, India is there. I'll be going here, India. So Mm. India related thing, pay scale grouping, if I want basic salary for India, anything DLS, allowance configuration, you can check it from here basically. Any allowance, any wage type creation, from here you can able to do that. If any error rectification. But errors are of two types. One is configuration error, and then you'll be having front-end error. Front-end error means that is the master data error. For example, under the payroll, you may use end user may forget to maintain any mandatory field under PA30 for any basic like Mm, payroll related info types are there, right? Payroll related info mm, types. Bank details are also payroll related. Ultimately, they have to go to the bank details of the employees. Okay. So bank details are mm. also payroll related things. So anything if they forget in the mandatory info type, then while running the payroll, you will be getting that error. If you debug that error or if you analyze the data, Uh, then you can able to see that usually payroll consultant can able to. Background voice is coming, sir. Is it Uh, from your side? no, not from my side. It's from Gautam side. अरे भाई म्यूट कर ले यार. Okay. Okay, sir, continue please. Okay. So basically, this is if any end user type error or master data error, then they can able to find it. For example, any details is not maintained. Org assignment date is wrong. Start date is wrong, but your payroll is running long backdated than this organizational assignment. So at the time of payroll run, you will be coming to know that it is the master data issue. Then at that time, you can that particular person can able to rectify it in the immediately by updating the records and all. If there is a configuration issue, then definitely you need to take the support of the consultant, payroll consultant or SAP HCM consultant. No, Okay. I'm asking this question because in our company we have that position Mm-hmm. called a change controller. Means the Mm-hmm. role of this position is like uh, it's a kind of you know
The coordinator between end user and technical team. Okay. Mm-hmm. So the designation is like payroll business analyst, you can say. So So it's I not think that is completely not more, technical. it is more than the end user. I think they will be having Yes. configuration access also. So they have some, more access than us. They called Mm-hmm. it, I think, maintenance. I don't, Okay. I'm not getting it. Support. Means they are They kind can of, support. yes, they are supporting different payroll teams or HR teams if they stuck Okay. anywhere. Yeah, yeah, yeah. So, So so generally most they'll be. of the troubleshoot they can do by themselves. If you Mm-hmm. know there is any If requirement from technical advanced team, then requirement yes, is they required, go then to they'll. technical team. Okay, 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 okay. So will it be helpful for me if in future if this kind of position Ye- will be Yeah, yeah, yeah. yes It will be helpful. come Means across, then I basically can apply. this will cover overall. This course will cover overall front end, not only the configuration part. Will be covering the front end aspects, what the major important info types that the employee should able user should able to update, how the payroll run should happen, that those are front end, and simultaneously how the payroll wage types are being configured, and what is the taxation, how the taxation will be dealing with the taxation kind of thing. And then you'll be having in time basically how to work schedules And payslip. Yeah. raising Jira is included in it. Which one? Jira. Zira. What is Hmm. Zira? Jira is kind if you have to implement something new in your system, then you have to raise a request. It's a kind of request. A That is the software called tool, I Jira. think. Zira is the JIR. tool. Yeah, Yes, yeah, yeah. yes. Okay, okay, okay. That So, the, what about so Zira? What you want to know about Zira? means is Jira also covering here? No, no, Zira is different. We'll be focusing only Different. on the SAP HCM part. Okay. SAP And what about schema and PCR? schema and PCR. I'll be covering. I will not cover to write the schema and PCR because it is a different section. But the understanding of schema and PCR only I'll be covering. Means what is schema? How do you read the schema? But writing of schema and PCR is totally different session. Means different So course. it's not comes under this SAP HCM concept. It comes under SAP HCM, but that is different scope, different course will be covering only the standard configuration, what is provided. So schema and PCR basically how to read and all, what are the schema and PCRs are there. That basic things I can cover, but not in depth of writing the PCR and schema. That is totally different. You can ask the coordinator. The teacher will be totally different. But as a consultant, what you feel? We should know this. No? Yeah, as a consultant. We should know this also. What you Yeah, feel? knowledge is also required. In depth is also required, but for a fresher, this is the means for the fresher SAP HCM fresher, immediately they will not give the PCRs and schemas. Those are for experience like 3 to 4 years. At least for 2 years of the experience, standard configuration is more than enough. Means the process which they will be keeping the freshers for at least 1 to 2 years is in that standard configuration. By working itself they will be getting or understanding, or later on they'll be taking the courses only on schema and PCR. But for freshers I don't recommend to get into that now only. Those are Hmm. little bit very much technical, not little bit. You need to have a complete focus. Okay, okay. So in SAP HCM, a full life cycle Mm-hmm. is means we have to implement and Mm-hmm. configure these four modules like OMPA, Yeah, PM, OMP. time management. These are the basic. These are the very important module without which the HR doesn't work. But not necessary that when you get the job, it may be either OM and PA consultant, or it may be
only for time management consultant, or it may be only payroll consultant just to manage payroll. The areas may be different. They may not provide you in the 4 areas, because right now I'm working Okay. for time and payroll only. They will not provide me in PA and on. But these four knowledge is very important for the person to start the career in the SAP HCM. Personal administration and personal management is different. No, personal administration, personal management is same, but in configuration, under personal management, you'll be covering also organizational management also. Here under personal management itself, you'll be covering organizational management. So personal management covers personal administration and organizational management. Two modules you may cover under personal administration. Okay. Okay, okay. You can continue with your, this presentation. Then I will ask at the end. Okay, sure. So, Mm. so PA basically, as we are dealing with this configuration, PA 40, PA 30, all this maintenance of the info types configuration, number ranges, and uh, this menus, info type menus, and whatever the actions are will be configuring, like to hire, promotion action. Those are not by default by the system. Those we have to configure based on the requirement. And while you hire the employees, as you see the info type, right? This is the info type. This individually will be going and maintaining, but this info Mm. type will be configuring in, for example, hiring action is there. If you click on that action, screen by screen you will be getting that info types. Those are called info groups. Those info groups configuration are done by us as a consultant. So whenever any person is clicking on hiring button, whatever the mandatory info type that should be maintained by the end user, that will be maintaining, they will be configuring in the info group and assigning it to the hiring action, so that when the employee will hire, or not only hire, promote or terminate, then line by line, sequence by sequence, that action, that info types will get popping up. Those configurations are also done under personal administration. Okay. So now organizational Mm-hmm. management, you'll be having org structures. First of all, you'll be having objects. Objects are nothing but these are the objects: org unit, position, position, and you may have job as an object. Each object is denoted by short form S. Job is S, and then person. Person is also an object, which is nothing but employee. Will be denoting as P. Mm-hmm. And then you'll be having cost center, which will be denoted by K. But cost center is configured in finance. Only thing is under organize, as each cost center is assigned to the org units. So we'll be only providing the relationship of cost center to the org units or departments, whatever you say. Will be only providing the relationship. We will not create the cost center. Cost center will be created by the finance team, which is ultimately linked to the company code, which decides the profit and loss of the company. Okay. So all this It's stuff, basically for accounting purpose. yeah, for accounting purpose, cost centers. What is the Means we have to book cost at particular area. You can cost exactly, and you have to book. So if there is only single cost center assigned to the particular person or something, means department or person, you will be finding mm, this here, company code, and then you will be finding the cost center. Cost center is here it is not assigned anyways. Here else you will be finding here cost center. Okay. In the organizational so assignment. is can you elaborate this organization management a little bit? Can you go again in that same thing? OM? Organization OM. Yes, 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 yes. Yeah, OM Info is type OM is one. basically configured here under basically already it is configured. Organizational management has three interfaces, which is Mm, nothing but expert mode, simple maintenance, and this one, organizational and staffing.
these are the things where you will be creating the org structure. For example, org unit, and the org unit will be creating positions. That org unit will be assigned to the that positions will be assigned to the job. Then org unit will be assigned, that is nothing but relationship, to the cost center. So wherever the org structure is created, the info type, OM info type, you will be finding only in expert mode. Here in simple maintenance and organizational staffing, only thing, you will be just creating the org structure. It will be like tree size structure. For example, if I just click here, if I select any organizational unit, so as you can see, it is a tree size structure. If I select this staff assignment, you'll be having different positions, and under the position, this person holder is assigned to the position. This is the simple maintenance. It is just click on creating. If I want to click and add positions, then if I'll be going back, if I want to add any org unit, I'll be just simply clicking on this and adding this. So under this, sub-org units will be added. So these org units are reporting to these org units. So relationships are automatically created. But in expert mode, if you go here, if you want to create any relationship, for example, this is only for org unit. If I create any org unit, under this I want to add another org unit. So this is the Western Canada parent org unit. So individually I need to create object, and then under relationship I have to go here and create just Means you are creating a sub org. yeah, suborg unit. You have to create suborg unit separately, and under mandatory means you have to assign here relationship, like relationship. This I'll be explaining in detail in our course. Basically, B stands for Mm-hmm. top to bottom, A stands for bottom to top. So B stands for top to bottom. So this is the parent. It is line supervisor of these org units. So that is the B. These numbers I will be explaining you. 002 means if object to object, for example, org unit to org unit 002. If org unit to position, it will be 003. But A and B will be remain constant. So independently, this is very confusing for the user. So independently, you have to assign the relationship. So better, so mainly user will be No, maintaining can you open that organization management for this particular employee? Uh, yeah. organizational management. This in Any depth I'll be info explaining. in This just only the info demo. type one? Yeah, Can you just show the screen of info type one of any employee? mhm. Yes, yes, Info type yes. one. Mhm. So Yeah, I'm saying like, how can we fill these details? It should be provided by client side. Like yeah. they These have. should be provided by the client side, right? Organizational means Yes, what yes. organizations are to be created, and where under which org unit are to be created. Those are provided by the client side. Then only will be assisting basically. And all these business areas are where that they will give us, like our business area is 9900. Yeah, Is that? these are again, this is the enterprise structure and personal structure. This comes under again under personal administration, if you see here. But those are different structures of HCM. If anybody asks, there are three structures. Organization structure, right now we have seen org unit, position, job, cost center. But enterprise structure and personal structure, these are the part of personal administration only, but in configuration you have to configure separately here. No, just I want to know Mm. what kind of information we are getting from client, or what kind of information we have to set from our all side on. all the information, all the processes like company code, what is there, personal area, what is there, those all things will be getting from client. We only need to configure as per the business blueprint. Business blueprint is this only, the processes where the organizations are located. Like this is located in UK. It is company code. Profit and loss means each company code is assigned to a single company. Personal area is United Mm, Kingdom, corporate United Kingdom. These all will be told by the client.
And sub area will be this. Here sub area is bifurcated, means bifurcation of personal area is sub area. Here they have mentioned as production HQ, means under corporate what are the areas that we will be working production, or it can be location So also, depend on the they client. will give us these three options like production HQ. Hmm. These three or four options they'll be giving you based on configure that. Okay. 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 Yeah. I got your point. So this is the three structures. Enterprise structure will be dealing with only the enterprise company wise, client, company code, personal area, personal sub area, etc. Personal area means it can be location or it can be any area based on the work area like corporate sector. So based on the requirement, client will be providing it. Generally, it will be location like state-wise, Maharashtra, and the Maharashtra personal sub-area will be Mumbai, Pune. Generally, it will be location. Or if they want to bifurcate personal area or Mhm. sub-area, the client will be providing you the same. Based on that, you have to configure it. And then personal structure, you'll be having employee group, employee subgroup. What is employee group? Employee group means group of employees. They may be active employees, they may be permanent employees, temporary employees, right? That Interns. Mhm. yeah, interns, that will be considered an employee group. Employee subgroup means again bifurcation of employee group, like permanent employees there. Under permanent employee, what kind of salaried employees there? It's Like their job to bifurcate or to make this, you can say, flow chart kind of information. yeah, yeah, It's their job, that- no? yeah, it's their job, client job, basically to categorize the group and subgroup. So they'll be providing you the same. Based on that, you have to configure. And then under though payroll area will be configured in payroll. I think you might aware of payroll area. It is configured This in is. payroll, Mhm. but it is used in personal structure because it is also related to personal employee related, because any employee Yes. payroll is run executed monthly in a frequency, and If if we, yes, if we are hiring any employee, suppose in my organization we have a country code 07 for India payroll. Okay. So yes, yes, for if we are hiring any employee, I don't know whether it's Mhm. a standard one for in every company or you can give any number to any country. I don't know if you know maybe. Mhm. Zero No, seven is it is not standard. You can give is depend on us. any number. Like for example, if it is I want payroll area to be created for TCS, then I may mention TA or TC, anything based on the understanding. So we define payroll area on the basis of location or on the basis of organization client. Mhm. You define payroll It's kind area on the basis of frequency. Means employees, which frequency, means if the employees are getting paid, certain group of employees paid getting paid monthly, and that to fifth of every month, particular date. okay. Those all employees you are grouping into one payroll area. Based on that, So you you will be are bifurcating on the basis of their payment, but yeah here on the we basis of their create payroll area on the basis of country code, means country wise. yes, 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 exactly. Okay, okay, Okay. So organizational structure is OM only, means first you'll be creating org units, and then under OM also you'll be having number ranges. For example, each object org unit is there. I want to create 5 series number range, 4 series number range. Then I'll Mhm. be configuring backend in SPR only number ranges. And then plan version is nothing but at a point of time, suppose if there is a standard plan version means right now it is simple. I think in expert mode you can able to understand the transaction code is PP01 in expert mode. Okay, This is the basically plan version, current plan. Every time it will be current plan. But if you don't want to disturb the existing plan version, but you want to create a org structure as a simulation part and look how it looks like before configuring under the current plan version, then you can create the plan version first. Like there are several plan versions, custom plan version created, and you can name the plan version. Under that plan version you have to activate the plan version. I will show you.
that plan version you can create the org structure. It will not reflect to you in the current plan version. It is just for your simulation purpose, how it look like and all. Then if you are satisfied and all, then you can include it in the current plan version. That configuration also will be covering in OM only plan version. Understood? Okay. Then we have time management. And then time management will be creating work schedules. Work schedules generally, you might have heard like rotating work schedules or any work schedules 9 a.m. to 6 So p.m. we maintain this in InfoType 07 Input type, planned yeah, work. exactly. If I go to PA30, whatever the configuration you will be doing, it will be visible here. For example, for Yes, this yes. employee, I think it is meant. It's kind of a schedule you can say. Yeah, work schedules. These Your all shift. configuration. Mm. Just for the work schedule rule configuration will be having so many things like creating holiday calendar, then assigning that holiday calendar to the location wise. Like Hyderabad is having separate holidays and all Yes, those, yes. yeah, all those clubbed together, and you'll be creating a shift, basically working shift from which So that's our job to create a yes, location-wise yes, calendar yeah, to implement that calendar. holiday calendar and creating work schedules and assigning all these holidays to their work schedules, so that under here you can able to So see work schedules. Right now it is a not. percentage, how can we bifurcate this percentage? Like This will 100. no, this will automatically come. Means if you are assigning that employee 50% under the work schedule only, you'll be getting that option backend Mm-hmm. configuration. If that work schedule is configured for the respective employees full time, then it will automatically come. Just if you select this work schedule, end user will select this work schedule and enter it, this automatically come. These all configuration will be covering in time management work schedule. It is just, this is just simple. Means for end user it is simple, just I am entering here, but the configuration which takes place in creating one work schedule is lengthy. That will be covering Okay. in So, time management. so we can add multiple work schedule as per that particular organization requirement. Yeah, you can add, suppose there is a rotating system, like some employees, group of employees, 6 a.m. to 5 a.m., some afternoon shift. So multiple work schedules you can create and associate it with the employees also, so that the employees will So automatically get into that work that's schedule. done by consultant only. Yeah, that's done by consultant, but the entry of the data here will be done by end user. And But user. as a consultant, you need to test it whether it is working Yes, fine or yes. No, as per particular employee, that's job of end user means उसको किस उसमें देना है उसको schedule में, yes, वो तो yes. वही करेगा end user But selection we have at to the do time the of joining. first level of testing. We have to only do in the development server only, unit testing. Then only we'll be sending Okay, it to. so do we have same kind of screen for our testing? Yes, yes, same kind of screen. All development, quality, production, the screen will be same. But But that one is for end user now. But you are showing right now. That's the end yes, user screen. yeah, this is the end user screen. End user में तो testing करना है. The same screen will be available for the development. But end user को इसका access नहीं रहेगा, back end का access जो हम configure करेंगे ना, creating work So schedule. That is अभी आप मुझे end user का दिखा रहे हैं कि डेवलपमेंट का टेस्टिंग वाला दिखा रहे हैं. ठीक है. डेवलपमेंट ना, ये तो अभी एंड यूजर का दिखा रहा हूँ. डेवलपमेंट हाँ. का तो वो जब हम करेंगे तब इन डेप्थ बताऊंगा. वो एसपीआरओ से ही होगा अंडर टाइम मैनेजमेंट. इफ यू गो टू अच्छा हम जो भी इनपुट करेंगे तो हम आउटपुट चेक करेंगे रिजल्ट सही आ रहा है एसपीआरओ कि नहीं. में टाइम मैनेजमेंट का अलग रहता है यहाँ पे मॉड्यूल. सो अंडर दैट यू विल बी अच्छा. फर्स्ट. ये वर्क शेड्यूल एक करने के लिए आपको इतने सारे चीजों पे जाना पड़ेगा. पब्लिक हॉलीडे कैलेंडर डिफाइड करना, सब एरिया ग्रुपिंग बोल तो एक एक पब्लिक हॉलीडे को सब एरिया, मतलब हैदराबाद, मुंबई ऐसा कुछ एरिया है, तो एक एक एरिया वाइज आपको वर्क शेड्यूल हॉलीडे क्लास असाइन करना है हॉलीडेज. देन दिस ग्रुपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. So daily work हम्म. schedule, period work schedule, and at last we'll be generating the work schedule over here manually, or you can generate it in batch. मीन्स Once it is generated, then automatically the respective employees will get these work schedules once the employee is assigned to the respective work मीन्स schedule.
it's a kind of a job we have to, we have to do in end of every year. You can say, no, before every new year. नहीं और पूरे कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है. एवरी ईयर यू विल बी डूइंग दिस. शेड्यूल वाला. Only generate एक step generating work schedule you will be doing every year because एवरी client ईयर issue. बाकी बिकॉज का हॉलीडेज वगैरह चेंज हो जाएगा. हाँ एक और चीज हॉलीडेज का अकेले आपको कॉन्फ़िगर करना है. These all linked already will be linked initially when you configure. इम्प्लीमेंटेशन या सपोर्ट के टाइम जब आप कॉन्फ़िगर करोगे ये सब हॉलीडेज इसमें ऑलरेडी लिंक्ड है. बट हॉलीडे कैलेंडर में आप ईयर वाइज रहता है तो दैट ओनली ईयर यू हैव टू कॉन्फ़िगर एंड असाइन इट. दैट्स इट. और कुछ नहीं रहेगा. सपोज आपको मेकिंग कैलेंडर इज जॉब ऑफ एचआर, राइट? ये जॉब ऑफ एचआर. बट एचआर देन वो कैसे देंगे आपको, किस फॉर्मेट में देंगे डिटेल्स कि आप इम्प्लीमेंट करो? तो पीडीएफ फॉर्मेट देते थे जब वो देते थे तो आपको या एक्सएमएल या एक्सेल ऐसा कुछ? एक्सेल में या तो पीडीएफ में दे सकते हैं. देयर रिस्पांसिबिलिटी. दे सेंड फिर इन देन दैट. आप उसको यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते या इसको यहाँ पे आके कॉन्फ़िगर करना. डिफाइन हैं. ओके. पब्लिक हॉलिडे में आपको दो रहेंगे. पब्लिक हॉलिडे, हॉलिडे कैलेंडर. पब्लिक हॉलिडेज डिफाइन करके फिर इंडिविजुअली पब्लिक हॉलिडेज डिफाइन करके देन हॉलिडे कैलेंडर में असाइन करना है आप उसको. इतने सारे हॉलिडे कैलेंडर वैलिड फ्रॉम डे इधर ही मेंशन करते हैं. इफ यू वांट टू गो फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स तो ये हॉलिडे कैलेंडर में नेक्स्ट 5 इयर्स तक लगा दूंगा. 2022 से लेके 2028 एनीथिंग. So this configuration will be done by us. वो नेक्स्ट 5 इयर्स सेम क्यों? सेम बोल के नहीं, हॉलिडे कैलेंडर रहेगा. हॉलिडेज डिफर हो जाएंगे. हॉलिडे कैलेंडर तो एक ही रहेगा नेक्स्ट 5 इयर्स में. ओके ठीक है. हॉलिडे कैलेंडर अलग होता है, फिर पब्लिक हॉलिडेज वो चेंज होते रहते हैं. सो हॉलिडे कैलेंडर एक ही रहेगा. कैलेंडर में उसके हॉलिडे अंदर ये चीजें चेंज हो. या या हाँ, हॉलीडे कैलेंडर के अंदर ये चीजें चेंज. हाँ. ओके ओके ओके. नेक्स्ट पॉइंट. ओके. सो then holiday calendars, then leaves quotas. कौन से info types में मेंटेन करते हैं हम लोग, ये आइडिया है? 2006. Yeah, that is quota. 2001 if any employee Absence for attendance 2006 I think. yeah 6. So quota generation basically manual quota generation भी होता है and then automated quota generation will be होता है. That I'll be covering in our time management class. Means अगर SL 50 है and it should be carry forward next year, what are the settings that will be covering, that I'll be explaining in this quota generation and leave management. Leaves. So if I just configure leaves and leave it, then employees can apply unlimited leaves because quota तो है ही नहीं. Quota means we will be restricting. Employees should not Quota go. means you are giving a logic according to company policy. Yes, we are going the logic according to policy. For example, सिर्फ 20 sick leave is allowed है, then we'll be configuring as per the requirement. Okay, so that will be covering time management. ठीक है सर. Okay, and then you'll be having payroll. payroll का तो end user का तो है शायद आपको experience. हाँ, ये सब चीजें जो दिखा रहे थे इसमें डेटा में मेंटेन करता हूँ. बाकी पेरोल रन, FI सिम वगैरह, ये अपना FI क्रिएशन, ये सारी चीजें मैं रन करता हूँ. Posting, finance posting and all. Okay. हाँ So हाँ. this and so basically बट इसमें कंसल्टेंट का रोल क्या है? हाँ, कंसल्टेंट का रोल मतलब ये है वेस्ट टाइप कॉन्फ़िगरेशन. ये जो भी एंड स्क्रीन से आप जो करते हो ना पेरोल से, ये I'll be going here. मैं इधर जाके मैं अगर इंडिया का पेरोल रन करता हूँ तो इंडिया सेलेक्ट करके I'll be going to run this payroll. अकाउंटिंग में जाके I'm just running this. Okay, and then बैंक ट्रांसफर इधर आएगा. These are the वो क्या बोलते हैं, इसका रोल है end users. So actual consultant का role here means configuration is the same, but taxation will be different. Like India payroll में 580 से 590 तक info types है.
यूएस में इट विल बी 260 से 250 से ऐसा कुछ इन्फो टाइप रहेगा. So, but almost majorly will be concentrating on India payroll. Almost configuration will be the same. Wage type configuration, payroll range. What difference is the taxation? Because India predefined taxation already रहता है. In case अगर कुछ चाहिए extra तो वो you have to go under the respective payroll. So इधर हम लोग करेंगे payroll wage type configuration basically. Wage type में भी अलग अलग types of wage types होते हैं. एक तो बेसिक पे होते हैं. आपको पता होगा बेसिक पे क्या है. इन्फो टाइप पे वे तो यू ये डिपेंड करता है ना कंपनी की रिक्वायरमेंट में वो कितने हेड रखना चाहते विल हैं. डिपेंड जैसे ऑन बेसिक एचआरए स्पेशल तो मैंडेटरी है. HRA special. But if you want to create the wage type, so बेसिक पे का मैं इधर जाके जनरली इधर है नेविगेशन पाथ. अगर मैं को वेज टाइप क्रिएट करना है देन आई विल बी गोइंग हियर. जनरली पेरोल में ही नहीं है, इसमें हर जगह जाना पड़ता है. फॉर एग्जांपल वेज टाइप क्रिएशन जनरली आपको इधर इधर रहेगा. मैं पर्सनल मैनेजमेंट में ही रहेगा. कहाँ पे है? यहाँ पे पर्सनल मैनेजमेंट. देन पर्सनल मैनेजमेंट में आपको ये रहेगा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन. इसमें आपको पेरोल डाटा रहेगा. पेरोल डाटा. देन here you have to create the wage types. Basically wage types जैसा कि ये एक रिकरिंग पेमेंट एंड डिडक्शन है वैसे ही आपको बेसिक पे रहेगा. बेसिक पे. बट वेज टाइप क्रिएशन में एक चीज you have to remember, you will be not creating the wage type, you will be only copying model wage type. समझ में आया? copying the model wage type. So यहाँ पे and then you will be getting into the wage type and you will be creating the wage type catalog. Just for example एक मैं बता कौन सी कंट्री है. इंडिया का. here I am selecting India country. तो ये क्रिएटेड वेज टाइप सिर्फ दो ही क्रिएट हुए इंडिया कंट्री. जो एम से शुरू होते हैं ना दोज आर मॉडल वेज टाइप. फॉर एग्जांपल अगर आई थिंक विल बी MB010 और समथिंग लाइक दैट. बेसिक सैलरी यहाँ पे MB10. इसको कॉपी करना है आपको. कॉपी करके अपना खुद का बनाना है. स्टैंडर्ड वेज टाइप कभी यूज नहीं करना वरना पेरोल रन में प्रॉब्लम हो जाती है. व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग वेज टाइप यू हैव टू कॉपी. 7000 से वेज टाइप शुरू करना है. 7001 7002 7000. आप मुझे ये कह रहे हैं जिस कंपनी में मतलब सॉफ्टवेयर में कुछ चीज है ही नहीं वो ब्लैंक है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर करके उसका मेन्यू बना रहे हो. पहले कंपोनेंट्स चाहिए आपको. HRA चाहिए आपको चाहिए. और जो ओके चाहिए. ये हमारा बेसिकली एक है मेन्यू है जिससे हमें सब चीज मिल जाएगी. यस मैक्सिमम चीज इसमें है. हाँ मैक्सिमम चीज. अगर सपोज कोई अलाउंस है so any allowance which is here which is quite relevant like child allowance है if your company wants इसको ही कॉपी करना. so, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो अपने आप कॉपी हो जाते हैं. that is the way you have to deal with because maximum things will be here only in model based. yes but sir who will define the logic behind calculation means बेसिक का 50% HRA होना चाहिए. ये लॉजिक कौन देगा सिस्टम? ये हम लोग ही देंगे ना. जैसे आप वेज टाइप डिसाइड करेंगे. अभी तो मैं पूरा बता नहीं सकता हूँ. जैसे आप वेज टाइप कॉपी करते हो देन यू गो टू दिस क्या बोलते हैं पर्सनल सब एरिया में कौन से एरिया में यू विल बी जस्ट कैटेगराइजिंग योर वेज टाइप अकॉर्डिंगली. देन अंडर दिस फॉर इंडिया स्पेसिफिकली वो इंडिया के लिए ज्यादा यूज होता है जो आप HRA परसेंटेज बोल रहे हो. तो अंडर दिस वो मतलब हम सारी चीजें लॉजिक खुद से देंगे बैक एंड पे राइट. चाहे वो लीव का हो चाहे वो अपनी सैलरी कैलकुलेशन का हो चाहे टैक्स कैलकुलेशन का हो. हियर दोस लॉजिक बेसिकली अगर आपको जाना है प्रोफेशनल टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करना है. HRA का भी अगर आपको कैलकुलेट करना है रिइंबर्समेंट पर्क्स. सो दिस इज बेसिकली फॉर इंडिया. So you have to give the logics under here. You have to go to payroll India and you have to give the logics. मुझे एक चीज बताइए सर. most of the consultant don't have knowledge of end user.
ओके, हम्म तो उनको थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होता अगर सपोज करें एक बेसिक सी चीज है कि हम्म किसी कंसल्टेंट को अगर ये नहीं पता कि बेसिक का 4.82 मुझे ग्रेचुटी बनाना है, ओके, हम्म हम्म तो यहाँ कैसे लगाएगा? क्योंकि मैक्सिमम लोग कंसल्टेंट रोल में आ जाते हैं बट उन्होंने कभी पेरोल या एचआर में काम किया नहीं होता, तो ये हम्म। प्रॉब्लम नहीं करती थी। एक बार फिर से बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस चीज में आप जो लॉजिक देंगे ना कैलकुलेशन पार्ट में, हाँ हाँ। वो लॉजिक आप तब दे पाएंगे ना जब आपको पता होगा कि ये भैया ये रूल है, हम्म ये लॉजिक है। बट मैक्सिमम कंसल्टेंट जो हम्म। कभी फुल रन नहीं किया होता या कभी एचआर ऑपरेशन या एचआर में काम नहीं किया होता, यस। राइट? तो अब जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिकली क्या होता है कि बेसिक का 4.82 ग्रेचुटी हमें कट करना है सीटीसी में, हम्म। तो अब ये चीज उसे पता होनी चाहिए ना, तो ये गैप कैसे फुल करेगा मैक्सिमम कंसल्टेंट? वो कौन बताता वो है उनको? लॉजिक लॉजिक तो आपको ये यही बता देंगे ना, ये क्लाइंट, ये कह रहा है। क्लाइंट ही बताइए कि ये ऐसा ऐसा चाहिए, बट यहाँ पे आपको आके वो रेस्पेक्टिव सेटिंग्स में जाके आपको एक्टिवेट करना पड़ता है वो कॉन्फ़िगरेशन। हाँ वो मैं समझ गया, बट हम्म। हाँ मतलब आपको इस पे तो काम करना आता है लेकिन आपको ये नहीं पता कि लॉजिक आप क्लाइंट पे डिपेंड है, मतलब आप ये कह रहे यस यस, क्लाइंट पे डिपेंड है कि आपको क्लाइंट ही बताएगा ना कि क्या करना है बेसिकली, हैं। व्हाट ओके, सो मीन्स अब चाहिए। जैसे मेरे जैसे बंदे या गौतम जैसे बंदे हैं जिन्होंने कोर अपने 5-6 साल एज ए एंड यूजर मतलब चीजें की हैं, हम्म। तो उनके लिए थोड़ा मतलब लॉजिक देना इजी हो जाएगा ना, तो हमें पता है मैक्सिमम कंपनीज में क्या चलता है, या हम क्लाइंट की बात को समझने में शायद ज्यादा पिक जल्दी कर लें, आपको लगता है कि क्या हुआ? क्लाइंट हमें इन्फॉर्मेशन, क्लाइंट? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको क्या ऐसा लगता है कि हम क्लाइंट की बात को समझने में ज्यादा इजी होगा हमारे लिए क्योंकि हमने काम किया है? हाँ, अगर आपने उस चीज पे काम किया है तो क्लाइंट की इजीली आप ग्रैब कर पाओगे। बट क्यों, अब क्या कहना चाह रहे हैं ना? हम्म अगर आप ये यही सेम मॉड्यूल अलग सॉफ्टवेयर में किए या अलग मैनुअली किए तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी एचआर प्रोसेसेस में, तो दैट ओनली यू हैव टू कम हियर एंड इम्प्लीमेंट इट। समझ गया, ठीक है। सर ये बताइए कि इम्प्लीमेंटेशन या कॉन्फ़िगरेशन ये जो आप बता रहे हैं, इज इट वेरी इट इज इजी और द वेरी डिफिकल्ट? बिकॉज यहाँ पे आप बता दिए, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने बताया, बट ऑन द रियल ग्राउंड टू विच एक्सटेंट इट इज हेल्पफुल? ये टू बी फ्रैंक, ये पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है वेरी सिंपल। It's just capturing the main details of the employees going in PA 30, maintaining the details। जो challenge आपको face करने को मिल सकता है time and payroll, because there are certain technical terminologies that you have to remember it। अगर आपको process पता है payroll का, time का, if you have worked in normal environment also, then it will take time, but you have to practice it and concentrate on these two. Actually these two are very easy, a little bit challenging, you have to focus much on this too in order to cope up with this too। but अगर आपको basic knowledge भी है how the payroll runs, what are the major wage types of the Indian wage types, what are the HRA which generally will be calculated on which basic pay or anything, PF कैसा calculate करता है, basic knowledge है, then you can easily cope up with these things, not problem। And what about the salary packages for the freshers or some experiences, those who has the any of the ideas in the So, initial stages? sir, Suppose after completing this course, will company treat us fresher or will they give some credit to our experience also for the end user? For सर consultant role, but we have experience as a end अगर user. आपको यूजर का एक्सपीरियंस है दैट इन द सेम सॉफ्टवेयर लाइक एसएपी, देन इट विल Hmm. एक्चुअली, क्योंकि आपको क्लियर और स्क्रीन से एंड ऑल, तो वो सैलरी के लिए भी इफेक्टिव है। अगर आप सिंपल फ्रेशर है देन आई थिंक दे विल बी गिविंग यू starting from 25 to 30,000 to start with, but within a couple of years you will be earning 3 to 4 times than that।
That's But suppose Lakshman's salary is he is already getting 10.5 package in the current organization. okay. Then is it the beneficial for him? हम्म, लक्ष्मण आपको है एसएपी का एंड यूजर का एक्सपीरियंस है? No, he has no any experience regarding that. He has never worked, but his salary package he is already getting the 10.5. ओके. He is giving an example, but in real time I have experience, but he's giving a just example. Suppose it is for me. Okay, it is हम्म. for me. I have that package, but I don't have any ideas. I am working on the same package and in the different form. Okay, so But you are the fresher in the SAP HCM. yes, it So, will be the totally yeah, fresher for me. then So is it beneficial for me, or I should I go with the others module like the supply chain management or any other? no, it is अगर आपको अगर आप सप्लाई चेन के डोमेन में हो then that will be great, No, but no, I don't have any experience regarding the supply chain. Suppose I just want to start the new thing. Okay, हाँ, आप कौन thing सी भी is, चीज शुरू करो, बट दैट सॉफ्टवेयर में तो आप फ्रेशर होंगे अगर आप कहीं भी करोगे तो द थिंग इज इफ नॉर्मल इन द डोमेन, जैसा कि सिंपल आई एम जस्ट इन एचआर ऑपरेशन, इट विल टेक जितना टाइम मुझे 4-5 साल कमाने में लग जाएगा वो 1 साल में आप कवर कर लोगे, दैट्स फॉर श्योर. दैट्स व्हाट द एसएपी गिव्स यू. Though it will give you starting less like 25 and max to max 35,000 per month. but no any organizations will give you that package as a freshers now, because if I will learn and I will go with that I don't have any experience. Suppose I have 1 year experience or 2 year Yeah, so experience, and based on the organization budget, जैसा कि recently freshers के लिए 25 to 30,000 बोल रहे थे वो लोग हमारे organization में, तो that with the low package you have to join you, but when the time cope up within a year or within 1.5 year, it will be double triple than that. got it. Got Okay, Yeah. thank you. Okay. Okay, so these are the main important things which we'll be covering in the So yeah. one query for this time Mm-hmm. management. Mm-hmm. In most of the organization, they have different, you can say, outside a third party software for Mm-hmm. attendance management, Okay. but they are using SAP HCM for maintaining data for like a Mm-hmm. HR and payroll. But Mm-hmm. their attendance model is for from any other company. So, Yeah. like most of the companies using Chronos with HCM, I think. Mm-hmm. So आप इसकी इनकी इंटीग्रेशन भी सिखाएंगे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के साथ? नहीं, we are not into integration is configuration. लेकिन टाइम मैनेजमेंट में एक लिमिटेशन क्या है एसएपी में, इट इज नॉट अ क्या बोलते पंच इन पंच आउट रिकॉर्डिंग नहीं रीड करेगा वो, उसके लिए आपको थर्ड पार्टी की जरूरत है, पंच इन पंच आउट विच विल बी कॉलिंग इट एज पॉजिटिव टाइम बट मैनेजमेंट. ओके, ये अभी डिटेल्स आपको इंटीग्रेशन कंसल्टेंट ही करेगा, जो टेक्निकल कंसल्टेंट है ना वो अलग है, आईटी कंसल्टेंट दैट विल बी इंटीग्रेटिंग फ्रॉम योर बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर टू द एसएपी. बट सर मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या कर रही है ना, उनकी अटेंडेंस मॉड्यूल जब डिफरेंट है तो वो उनके ऐसा बंदा चाहिए कि जो एसएपी को उससे कॉन्फ़िगर करना भी जानता हो, तो वो कहाँ सीखेंगे हम? वो फिर इंटीग्रेशन का अलग कोर्स है, वो थर्ड पार्टी मिडिल रहेगा, जैसा कि फॉर एग्जांपल डेलबूमी है which is acting as a middleware to integrate from one. This will be not being taught in SAP HCM. इंटीग्रेशन का अलग मॉड्यूल होता है, मींस अलग टेक्नोलॉजी होता है, दैट उधर से पूछते हैं जनरली. मेरे टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं पूछते थे, बिकॉज जनरली इंटीग्रेशन के लिए कोई और रहता था उनका ऑर्गेनाइजेशन में. द ओनली पर्पस फॉर माय रोल इज टू जस्ट कॉन्फ़िगर द required module. Time management में any support work आया, then I will be configuring that. Any leave related issue आया, then I will be rectifying that. बस ऐसे ही रहता था, not that सर much. एक बात, अच्छा आपका ये प्रेजेंटेशन कितना बचा? मुझे लगता नहीं आज सक्सेस फैक्टर कवर हो पाएगा, इसका एससीएम का ही बताइए कितना बचा हुआ? एससीएम का बस मोस्ट हो गया है, यही पेरोल मॉड्यूल इधर तक हम लोग कवर करने वाले, बस वही बताना था. आप लोगों को पूछो अगर कुछ. बाकी आप जो आई मीन अगर कुछ रह गया इसमें तो आप बता दीजिए मुझे. थोड़ा सा कोई जनरल क्वेरीज या नॉलेज से मतलब आपको बात करनी थी, 10 मिनट लगेंगे उसमें.
देन मुझे लगता नहीं कि सक्सेस फैक्टर आज हो पाएगा। नहीं बेसिकली मैं सक्सेस सक्सेस फैक्टर के लिए फैक्टर्स आया था। कोई नहीं कल करेंगे। सक्सेस फैक्टर्स इज मोर इजी व्हेन कंपेयर्ड टू SAP HCM, देयर इज नो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज। ठीक है सर, आप इससे कंप्लीट कर लीजिए, है ना, फिर हम थोड़ा सा कंक्लूड करने से पहले 10 मिनट की एक जनरल डिस्कशन करनी थी बस। Okay, वही ये in payroll module will be doing with wage type configuration, and then based on that you'll be having payroll run, right? Payroll run and payslip configuration भी हम लोग फोकस करेंगे, जैसा कि various payslip कैसा after payroll run when you'll be clicking, if you know form बोल के रहता है वेरियस, इधर आपको एडिशंस और डिडक्शंस में आएंगे ना सर्टेन वेज टाइप्स, तो दैट कॉन्फ़िगरेशन, पेस्लिप कॉन्फ़िगरेशन, एंड देन कंट्रोल रिकॉर्ड पता ही होगा आपको, नहीं पता है तो PS03 है ट्रांजैक्शन रोल, यस यस, PA03 एग्जिट रिलीज करेक्शन मोड, ये सब exit release correction. So if will control the payroll area for which we are running the payroll. If there is a cutoff period, like होता है ना फ्रीजिंग पीरियड, आपके कंपनी में भी होता है, तो आफ्टर दैट डेट नो अपडेशन शुड बी रिकॉर्ड, नो अपडेशन अलग। उसको हार्ड वॉल, हार्ड वॉल, क्या वो हैंड हार्ड वॉल, हार्ड वॉल, हार्ड ऑल, समझ नहीं हार्ड आया वॉल क्या में बोल, हार्ड वॉल, हार्ड वॉल, हाँ हाँ हाँ। तो वो बेसिकली उधर से आप रिलीज कंप्लीट कंट्रोल कर सकते हैं सिस्टम को विद द वन क्लिक, विद रिलीज फॉर पेरोल जैसे आप दबाते हो तो वो सिस्टम लॉक हो जाता है। ओके, फिर वो तो एंड यूजर करता है ना, इसमें कंसल्टेंट क्या कर रहा है? कंसल्टेंट नहीं करता है वो, मैं बोल रहा हूँ ना, वो आपको कंसल्टेंट पेरोल एरिया क्रिएट करता है, बट आपको एंड यूजर की भी नॉलेज तो भी दिखाना था ना, इसलिए मैंने बोला था कंट्रोल रिकॉर्ड एंड यूजर ही करता है, कंसल्टेंट पेरोल अच्छा, एरिया क्रिएट करता है एंड कॉन्फ़िगर ठीक है। करता है बेस्ड ऑन दैट वेज टाइप कॉन्फ़िगरेशन एंड अदर, जैसे मैं बताया ना प्रोफेशनल टैक्स, जो भी टैक्स रिलेटेड है, स्टैंडर्ड टैक्सेशन स्लैब वाइज कॉन्फ़िगरेशन तो रहेगा, अगर कोई एक्स्ट्रा है लाइक प्रोफेशनल टैक्स सर्टेन एरियाज में रहता है, सर्टेन नहीं रहता है, दैट कॉन्फ़िगरेशन विल बी एंड दैट्स ऑल दैट विल बी कवरिंग इन आवर पेरोल। आपको पूछना है तो पूछो, क्या डाउट्स है? तो मैं ये कह रहा था, जैसे कुछ भी ना टैक्सेशन में कुछ भी रूल चेंज कर देती ना गवर्नमेंट, हम्म, तो उस चीज को सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या रोल है कंसल्टेंट का? उस टैक्सेशन में अगर कुछ चेंजेस होता है या सिस्टम होता है, तो पेरोल इंडिया ये सब होता है ना, तो एक पैच रिलीज होता है, वो पैच ऐप और बेसिस कंसल्टेंट मिलके अपडेट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड जो टैक्सेशन है ना वो अपने आप आ जाता है आपको, तो उसके मतलब लिए उसमें हमें कुछ नहीं करना, बैक एंड करते हैं, ये कह रहे हो ना? हमें कुछ नहीं करना, बट पैच अपग्रेड करते रहती है, मतलब फ्रीक्वेंटली अपग्रेड होते रहता है ना सिस्टम, तो उसी में कवर हो जाएगा, वो कुछ इश्यू नहीं है। अच्छा तो सर, प्रोफेशनल टैक्स और पीपीएफ जो 12%, थोड़ी जगह 10% रहता है, थोड़ी जगह फिक्स्ड अमाउंट कटता है, राइट? पीपीएफ हाँ बोल हाँ, रहे हैं, पीएफ में, हाँ, तो वो ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे, दैट आई विल बी टेलिंग यू इन पेरोल हाउ इट विल बी डन, सो वो अपने आप कट कटा के आपको पेस्लिप में दिखाई देता है। ओके। सर मैं एक चीज पूछ रहा था, सपोज करें पेरोल में हम्म, बल्क में कोई वो हो गया है, आई मीन कोई गलत चीजें प्रोसेस हो गई है, सपोज बल्क करें। में हाँ, मैं सपोज आप ये करें कि किसी एम्प्लॉय के 100 एम्प्लॉयज के कोई डिडक्शन हो गई है, किसी मान लो कि किसी प्रोसेसर ने गलती कर दी जो रन कर रहा है पेरोल, हम्म, उसकी मिस्टेक से या टाइपिंग एरर से कुछ भी हो गई। अब हम्म, आपको नेक्स्ट मंथ वो चीज सपोज करें रिवर्स करनी है बल्क में 100 एम्प्लॉयज या 200 एम्प्लॉयज की, तो इसके लिए कोई टूल है आपके पास? वेल अगर दूसरे इंफो टाइप्स अपडेट करना है बल्क में तो LSMW रहेगा, लेकिन ये पेरोल में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वेस्ट टाइप्स डिफर कर सकते हैं, 100 एम्प्लॉयज का एक ही वेस्ट टाइप्स नहीं रहेगा, राइट? तो LSMW गड़बड़ कर सकता है, तो उसके लिए BDC एबैपर एक बनाएगा टूल, वो टूल से आप बल्क में अपलोड कर सकते हो, दैट विल बी क्रिएटेड बाय एबैपर। अगर आप पेरोल के अलावा दूसरे को इंफो टाइप्स बोलेंगे तो लीगेसी वर्कबेंच बोल के एक LSMW का टूल रहता है, लीगेसी सिस्टम, तो उसके थ्रू आप बल्क पेरोल का भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन पेरोल में क्या रहेगा, इंफो टाइप्स वेरीज होएगा, उसमें इंफो टाइप 1, इंफो टाइप 2, तो एक एम्प्लॉय को इंफो टाइप 1 में कुछ और अपडेट होगा, इंफो टाइप दूसरे एम्प्लॉय को इंफो टाइप 1 में HR अपडेट होगा, तो
करेक्टली पिकअप नहीं करेगा, इसलिए LSM के ये पेरोल इसी फेल है उसके इस चीज के लिए ना सर मैं आपसे इसीलिए मैं पूछ रहा था, बट मुझे नहीं पता था कि जो जीरा होता है वो मतलब वो एसएपी का पार्ट नहीं है। मैं उसे एसएपी का पार्ट समझता था। बिकॉज क्या होता है कि जब भी कुछ चीज हमें मान लीजिए कि हमें नेक्स्ट मंथ से सिस्टम में या पेरोल में कोई नई चीज इम्प्लीमेंट की है, तो हम उसका जीरा रेज कर देते हैं कि भाई ये रिक्वायरमेंट हमारी है। ओके तो जीरा रेज करना एक मतलब एक काइंड ऑफ टूल है वो। या फिर दैट वो इज उस टूल वो के थ्रू, टिकटिंग टूल जैसा बोलते हैं ना, टिकट रेस करते हैं एंड ऑल, दैट इज सेम हाँ टिकट। टूल है वो, तो एग्जैक्टली। उसके थ्रू हम करते हैं तो वो चीज एप्लीकेबल हो जाती है। और सपोज करें मुझे नेक्स्ट मंथ से ना कोई चीज रुकवानी है सारी एम्प्लॉयज की, मतलब वो पे नहीं होनी चाहिए। सपोज करें ओके ओके। आज तक कोई हम अमाउंट पे कर रहे थे और वो वाले हेड में वो अमाउंट जानी ही नहीं चाहिए, तो मैं सबका जाके उसे डिलीट तो मारूंगा नहीं या स्टॉप करूंगा, मतलब डिलीट तो करूंगा नहीं उसको 830 में के, तो बल्क में करवानी है। तो वो चीज कह रहा था कि उसमें कंसल्टेंट कोई रोल होता है उसका क्या? कंसल्टेंट का नहीं रहता है, एबैप के साथ कोऑर्डिनेशन रहता है। वो टूल BDC बनाता है तो कंसल्टेंट टेस्ट कर सकता है वो टूल को, फिर अगर एवरीथिंग इज फाइन देन वो यूजर को फॉरवर्ड कर सकता है। एक टूल बनाता है एबैप पर BDC बोल के, तो उसमें पूरे वेज टाइप्स एक साथ आप अपलोड कर सकते हो इन अ बल्क। ओके सर। अच्छा मुझे थोड़ा ये बताइए, चलो मैं ये पूछ रहा हूँ कि प्लेसमेंट वगैरह कुछ क्या, सपोज करें कि कोई मतलब जैसे जैसे ये फ्रेशर कह लो या बहुत कम एक्सपीरियंस के साथ जो जा रहा है, आप चाहे तो तो एक्सपीरियंस को उस परचेज कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑन द सब्जेक्ट। जैसे कि आजकल मार्केट में 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी लोग फेक लगा के घुस रहे हैं, बट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑन द सब्जेक्ट आफ्टर गेट ट्रेंड। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूट भी एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड करा दे रहे हैं? वो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, आई हाँ थिंक। मैं समझ गया आपकी बात। खैर वो तो वो है हो गया ना कि वो तो दूसरे तरीके की टेक्निक हो गई। मैं तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि एक कंसल्टेंट की लाइफ क्या होती है। बिकॉज मुझे आज तक ये चीजें कंसल्टेंट की चलती कैसे है, कोई क्लाइंट को सर्व करता है, कोई इन हाउस करता है। अब जैसे TCS आप कह रहे हो ये IT कंपनी है, तो ये IT रिलेटेड प्रोडक्ट्स अपने क्लाइंट को देती है, बात समझ आती है। ये SAP की भी सर्विस देती है क्या अपने क्लाइंट्स को? एक बार फिर से बताना, समझ में नहीं आया आपका क्वेरी। मुझे रोल समझ नहीं आता कि SAP कंसल्टेंट का रोल क्या है, कि वो अपने क्लाइंट्स को देता है तो उसकी जॉब वो क्या होती है, मतलब उसका ऑन रोल जॉब किस कंपनी में होता है? वो किसी कंसल्टेंट वाली कंपनी में जाता है फिर वहां से क्लाइंट पे जाता है, नहीं नहीं, क्या जरूरी ये चीजें नहीं है। चलती हैं? आप चाहे तो डायरेक्टली क्लाइंट आप अपने पेरोल पे हायर कर सकते हैं। जैसा TCS खुद का एसेट इंप्लीमेंट करना चाह रहा है, सपोर्ट करना चाह रहा है, तो वो अपने पेरोल पे भी ले सकता है। आपको जरूरी नहीं कि सिर्फ कंसल्टेंसी के थ्रू ही जाना तो है। वो अपने इन हाउस के लिए करेगा ना, वो किसी और के लिए नहीं करवाएगा हाँ, अपने इन इन हाउस? हाउस के लिए ही करवाएगा, किसी और के लिए नहीं करवाएगा। अगर सपोज TCS का भी कोई क्लाइंट है, फॉरेन डेलीगेट्स रहते हैं ना, उनके लिए अगर हाँ आपको साइमल्टेनियसली इंप्लीमेंट करना है तो वो भेज सकता है आपको, लेकिन आप पेरोल TCS के भी रह सकते हैं। तो इन हाउस भी हो सकता है, तो TCS बड़ी कंपनी है ना, तो वो आपको दूसरे जगह भी प्लेस कर सकता है, बट मतलब TCS भी इस चीज को अपने क्लाइंट को SAP वाला इंटीग्रेशन इम्प्लीमेंटेशन करवा सकती है? यस अच्छा यस। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई TCS के अपने रोल पे SAP कंसल्टेंट के पास है, ठीक है। यस SAP अब उसके कंसल्टेंट। क्लाइंट को रिक्वायरमेंट भी वहां भी उसके क्लाइंट के ऑफिस में करना है SAP इम्प्लीमेंट, तो अपने बंदे भेज रहा हो, तो ये कह रहे जरूरी हो? नहीं है कि क्लाइंट के ऑफिस को जाना है, वही सेम सिस्टम पे रहता है ना क्लाइंट। अनटिल एंड अनलेस कुछ क्रिटिकल रिक्वायरमेंट या सिस्टम एकदम काम करना बंद कर दिया, HR रिलेटेड प्रोसेस कुछ काम नहीं कर रहा है, देन दे विल सेंड यू टू द क्लाइंट लोकेशन, नहीं तो जरूरत नहीं। बट जनरली ये भी होता है ना कि जो ये इंस्टीट्यूट भी होते हैं या कोई कंसल्टेंट वाली कंपनियां होती है, ये अपने रोल पर रखते हैं, दोनों क्लाइंट का काम करने के लिए भेजते हैं लेकिन अपने रोल पर रखते हैं, ऐसा भी है? यस यस, ऐसा भी है। अच्छा सर, एक बार सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया कहीं, हम्म ठीक है, पूरी हम्म। और साइकिल मतलब हो गई उसकी, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन खत्म, फिर क्या रोल रह जाता है कंसल्टेंट का? कुछ में सिस्टम इम्प्लीमेंट के बाद अगर ऐसा नहीं कि आपकी जॉब चली जाएगी, वैसा इतनी जल्दी नहीं रहेगा। सिस्टम एक बार इम्प्लीमेंट हो गया तो एंड यूजर्स है ना, कुछ भी कर देते हैं सिस्टम में, क्या क्या की एंट्री करके कुछ ना कुछ बग लेके आ जाता है, कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं, तो
सपोर्ट रोल में उस टाइम आपको भिजा देते, या कोई और क्लाइंट है समझो, उस प्रोजेक्ट में आपको लगा देते। तो प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, वो कोई इश्यू नहीं। अच्छा, प्रोजेक्ट चेंज होते रहते हैं। चेंज होते रहते हैं। सो टीसीएस में ही अच्छा। काफी प्रोजेक्ट्स रहते हैं, बहुत बड़ी है ना कंपनी, टीसीएस में ही काफी प्रोजेक्ट्स हम्म। रहते हैं। तो उनका कोई दूसरा प्रोजेक्ट है जिसमें इम्प्लीमेंट या सपोर्ट की जरूरत है, तो उसी में आपको शिफ्ट करवा देंगे, या फिर उनके क्लाइंट के प्रोजेक्ट में लगा देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे वो। अच्छा, पर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि हम्म। SAP HCM सीखना जरूरी है कि डायरेक्ट एज सक्सेस फैक्टर पे जा सकते हैं? बोथ आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। अब एसएपी एचसीएम, अगर आप इंडिया लेके चल रहे हो कि मुझे इंडिया में ही रहना है, इंडिया क्लाइंट, इंडिया कंपनी के लिए काम करना है, तो ज्यादातर इंडियन कंपनीज एसएपी एचसीएम चला रहे हैं। अगर सक्सेस फैक्टर्स में जा रहे हो, अगर आपका ख्वाहिश है कि अब्रॉड जाएंगे, थोड़ी दिन क्लाइंट साइड रहेंगे, यूएस जाने का मौका मिलेगा, ये वो, देन सक्सेस फैक्टर्स, आजकल यूएस, यूके, यूरोप में सक्सेस फैक्टर्स ज्यादा चल रहा है। तो बोथ का अलग फायदा है एक्चुअली। बट कोई अगर उसको मतलब स्टार्टिंग से सक्सेस फैक्टर को स्टार्ट करे तो कोई इशू नहीं है उसमें? नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। सक्सेस फैक्टर्स भी बाय स्क्रैच अगर पढ़ाऊंगा तो ये पैरेलल है, जस्ट ऑल्टरनेटिव है। एचसीएम का ऑल्टरनेटिव सक्सेस फैक्टर्स है। व्हाई एचसीएम इज स्टिल देयर? बिकॉज ऑफ पेरोल। बट सक्सेस फैक्टर्स में डायरेक्टली पेरोल है ही नहीं। ईसी पेरोल इज नथिंग बट इंटीग्रेशन, वो अलग मॉड्यूल है। सो तो टाइम वहाँ पेरोल प्रोसेस कैसे होता है जिनके पास क्या सिर्फ हो, सक्सेस फैक्टर है? जिनके पास सिर्फ सक्सेस फैक्टर मतलब अगर आप ये मानिए ना कि कोई नई कंपनी फर्स्ट टाइम अपने प्रीमाइस मतलब अपने कंपनी में लगवा रही है ये सॉफ्टवेयर SAP का, तो वो आज की डेट में सीधे सीधे सक्सेस फैक्टर को ला सकती है, वो पुराने वाला SCM को जरूरत नहीं है मान लीजिए, तो हाँ, वो केस पेरोल अगर वो एक्टिविटी कैसे पेरोल करेगी? एचसीएम से आ रही है तो इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी वो। नहीं, उसके पास सर है ही नहीं ना SAP, आप मान के चलिए आज तो तक है फिर ही वो नहीं, वो कोई फर्स्ट टाइम थर्ड कर रहा है। पार्टी पेरोल पे ही जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट पेरोल तो सपोर्ट नहीं करता है सक्सेस फैक्टर्स। तो पेरोल के लिए कुछ थर्ड पार्टी सस्ता सॉफ्टवेयर रख लेगी वो, सिर्फ पेरोल रन करने के लिए, दैट्स इट। अच्छा, मतलब आप अभी ये कह रहे हैं कि सक्सेस फैक्टर पेरोल रन नहीं करता जैसे ये SCM करता है? नहीं नहीं करता है, बिकॉज तो, इंडिपेंडेंटली पेरोल सपोर्ट नहीं करता है सक्सेस फैक्टर्स। तो जो अगर इसे बोलते हैं सक्सेस एम्प्लॉय फैक्टर्स पे सेंट्रल पेरोल रन पेरोल। करना है, दैट इज ईसी पेरोल, व्हिच विल बी ओनली डन बाय एप्लीकेशन कंसल्टेंट, एपीआई बोल के रहेगा। इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन कंसल्टेंट बोल के रहेगा एपीआई, वो आपको इंटीग्रेट करके रहेगा। इसलिए ईसी पेरोल इज डिफरेंट मॉड्यूल, इट इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन। अल्टीमेटली वो सक्सेस फैक्टर्स का स्क्रीन आपको एसएपी एचसीएम का जैसा स्क्रीन है ना, सक्सेस फैक्टर्स पे भी वैसे स्क्रीन हाँ। दिखाई देगा, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशंस। तो इसी पेरोल में पेरोल रन नहीं होता, मैं ये कह रहा इसी पेरोल में रन होता है, लेकिन इसी पेरोल ही इंटीग्रेशन है, इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन। इसी पेरोल वाला कोई कॉन्फ़िगर नहीं करेगा पेरोल। व्हाट इज इसी पेरोल? ऑलरेडी कॉन्फिगर्ड पेरोल को इस सक्सेस फैक्टर्स में इंटीग्रेट करके लाना है, दैट इज द काम, दैट इज द पर्पस ऑफ इजी पेरोल कंसल्टेंट। दे विल नॉट कॉन्फिगर एनी पेरोल, दे आर ओनली इंटीग्रेशन कंसल्टेंट, इजी पेरोल कंसल्टेंट्स, एपीआई कंसल्टेंट्स बोलते हूँ। हैं हम मतलब लोग। सक्सेस फैक्टर को एम्प्लॉय सेंट्रल को इंटीग्रेट करना है एम्प्लॉय सेंट्रल पेरोल से। हाँ, एम्प्लॉय सेंट्रल पेरोल का वही तो जॉब है ऑलरेडी। एसएपी एचसीएम पेरोल कंसल्टेंट्स उन लोग का नहीं रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, जो एसएपी एचसीएम में पेरोल को ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ईसी पेरोल का काम क्या है? जो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड पेरोल है एसएपी एचसीएम का और सक्सेस फैक्टर्स का, दोनों मिडिलवेयर के थ्रू पॉइंट टू पॉइंट इंटीग्रेशन करना है, दैट्स इट। वही तो काम है इंटीग्रेशन कंसल्टेंट का, ओके। इसी पेरोल कंसल्टेंट का। दे आर नॉट कॉन्फ़िगरिंग एनी पेरोल थिंग इन सक्सेस फैक्टर्स। तो जो पहले तो एम्प्लॉय सेंट्रल सीखना मस्ट है, एम्प्लॉय सेंट्रल के साथ फिर एम्प्लॉय सेंट्रल पेरोल मॉड्यूल ऐड करवा सकता है? एम्प्लॉय सेंट्रल पेरोल मॉड्यूल सीख लिए समझो तो आपको एसएपी एचसीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हर कोई आंख बंद करके ले लेगा। अच्छा, अगर किसी को एम्प्लॉय सेंट्रल प्लस एम्प्लॉय सेंट्रल पेरोल दोनों आता है तो? हाँ, दोनों आता है तो। लेकिन अगर खाली एम्प्लॉय सेंट्रल भी आता है तो भी आंख बंद करके ले लेगा, क्योंकि ईसी मॉड्यूल आजकल बहुत ट्रेंडिंग है मार्केट में। सर वही सिखा दो ना पहले हमें। ठीक है, जैसा आप लोग बोले। ईसी, अगर ईसी मॉड्यूल पहले सीख के एचसीएम बाद, तो वैसे ही करते हैं, ईसी पहले सीख के एचसीएम बाद में सीखते हैं। बिकॉज सर पता है क्या, आपको भी पता है कि SCM जो चीज़ है वो धीरे धीरे अब रिप्लेस होगी सक्सेस फैक्टर से।
अब हम पहले सर इतने लेट सीख रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को, फिर हम पहले उस टेक्नोलॉजी में घुसे हैं जिसका फ्यूचर 3-4 साल बाद है नहीं है, किसी को नहीं पता, फिर हम सक्सेस फैक्टर में जाए तो हमारे लिए जर्नी थोड़ा लॉन्ग नहीं हो जाएगी? वो तो है, डिपेंड करेगा, कोई नहीं। अगर आपको एसएपी ईसी सीखना है तो वो पहले शुरू कर देते हैं, बिकॉज मार्केट में आजकल ज्यादातर एम्प्लॉय सेंट्रल ही तो चल रहा है। हाँ, और फिर उस बेस पे हम अपने इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कर लेंगे और फिर इस कोर्स को भी कंटिन्यू कर सकते हैं ना? या श्योर, बाद में कंटिन्यू ठीक कर है सर। सकते हैं। तो जो ये कोऑर्डिनेटर ने पूरा सिलेबस भेजा हुआ है ना, वो आपके पास है ना? वो सारे मॉड्यूल आप कवर करते हैं ना? मतलब एक बस मैं आइडिया ले रहा हूँ कि उसमें क्या एसएफ एक का मास्टरी सिलेबस होता है। भेजा है आपने? हाँ, सिलेबस भेजा, उसमें 3-4 चीजें थी, जैसे कि जैसे कि पीएमजीएम, एम्प्लॉय सेंट्रल मास्टरी, इंट्रोडक्टरी टू एम्प्लॉय सेंट्रल, है ना? पीएमजीएम अलग मॉड्यूल है वैसे, लेकिन बेसिक्स में कवर करूंगा, एम्प्लॉय सेंट्रल कोर कंप्लीटली कवर करूंगा। पीएमजीएम इज डिफरेंट मॉड्यूल, उसमें बेसिक्स आपको कवर करूंगा कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड ऑल। और उसमें एक और था एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग करके। हाँ, एनालिटिक्स रिपोर्टिंग तो लास्ट में वैसे भी करना है, एंड ऑफ द डे मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग तो चाहिए, और क्या चाहिए। ठीक है, और उसमें एक कंपनसेशन भी लिखा हुआ था, तो मैं ये कह रहा था कि पूरा कोर्स एक साथ है कि सिर्फ एम्प्लॉय सेंटर सेपरेट है, उसके साथ आएगा ये सब कुछ? ये बेसिक्स कवर करूंगा, कंपनसेशन इज वेरी डिफरेंट मॉड्यूल जो जिसमें काफी कॉन्सेप्ट्स आएंगे, तो मैं एम्प्लॉय सेंटर का कोर आपको सिखाऊंगा, अदर देन दैट बेसिक्स कवर करूंगा, ये सब दूसरे मॉड्यूल्स है, कॉम्पेंसेशन, तो परफॉर्मेंस। मतलब हम इंटरव्यू में ये चीज नहीं बोल सकते कि हमें पीएमजीएम आती है, मतलब आप ये कह रहे हो? नहीं, इसी कंसल्टेंट को पीएमजीएम का कभी पूछते ही नहीं इंटरव्यू में, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी ईसी अच्छा, जॉब। वो तो यहीं तक रखते हैं कि इसी या रखते हैं पीएमजीएम पे। तो आप सर चाहे तो इन नौकरी फ्यूचर में कभी मार हमें के ऐड करना हो सकते हैं मॉड्यूल? पीएमजीएम कंसल्टेंट या ईसी कंसल्टेंट, ऐसा मार के देखो, ईसी के लिए अलग ही आएगा, पीएमजीएम के लिए अलग आएगा जॉब। बट सर जैसे आजकल मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट या कोई भी कहता है कि आपको इसी के साथ ना 1-2 मॉड्यूल और आने चाहिए, तो हम्म। तो वो उस पर क्या अलग कहते अलग हो आपको एक्सपीरियंस के लिए? जनरली मैं मुझे तो सिर्फ ईसी के लिए ही अप्लाई किया था, तो आ गया था स्टार्टिंग में, ईसी का ही काफी रिक्वायरमेंट चल रहा था, बिकॉज इट इज ओनली द लार्जेस्ट मॉड्यूल इन सक्सेस फैक्टर्स। पीएमजीएम है बट कंपैरेटिवली ईजी, वो साल में एक ही बार काम आता है पीएमजीएम, जस्ट यू नीड टू डू द रूटिंग, जब मैपिंग, आप वो अप्रेजल भरते हो अपना, अप्रेजल एक्सेट्रा। या और फिर हाँ अप्रेजल गोल्स, पहले तो आप जुलाई अगस्त में कंपनी गोल्स भरवा देती है, या वही फिर तो फिर वो इसी पॉइंट देना द वगैरह वो कंप्लीट सब चीज। पैकेज ऑफ द एम्प्लॉय, मास्टर डाटा मेंटेनेंस, जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा इसी में, तो बाकी के तो छोटे छोटे ही है मॉड्यूल्स, बट दे आर ठीक है, कंसिडर्ड। मतलब आप एक आइडिया लेकिन हमें दे दोगे उसका भी ना? या आइडिया दूंगा मैं, नो इश्यूज। बट हाँ, बट सर इसी में जब आपके पास ज्वाइन करूँगा तो इसी ना मतलब डिटेल में इन एंड आउट, मतलब लगना नहीं चाहिए कि बंदा जॉब नहीं किया कभी, इतनी डिटेल में पढ़ा देना। या श्योर श्योर, डेफिनेटली। ठीक है सर, मतलब कहते हैं ना कि इन एंड आउट, एक तो ऊपर ऊपर से पढ़ाना होता है कि बस पूरा करना है भाई सिलेबस, वो नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं, समझ लो रियल टाइम सिलेबस के साथ। टाइम टाइम भले ही हम लोग दो दो महीने तीन महीने लगे, बट एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन डेप्थ आपको समझ में नहीं आया तो तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि आपको वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है। जी सर। सर और आप ना थोड़ा सा एक चीज और बताएंगे कि आपका मतलब पैटर्न क्या रहता है पढ़ाने का? जैसे आपने क्लास दी, देन जो चीज समझाई वो आप एम्प्लॉय से करवाते हो उसके सॉफ्टवेयर पे, अगर मतलब कैसे जैसा कि चलता है फॉर आपका? एग्जांपल ईसी में जैसा थीम मैनेजमेंट है, होम पेज कॉन्फ़िगरेशन है, जैसा होम पेज कॉन्फ़िगरेशन फॉर एग्जांपल, तो फिर हम्म, वो समझाने के बाद आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक आध वो दूंगा कि इस हिसाब से कॉन्फ़िगर करने का है, होमवर्क टाइप, तो ताकि आप अगले टाइम कॉन्फ़िगर करके लाके बता पाओ मेरे को, तो थोड़ा बहुत वो अच्छा प्रैक्टिकल भी देते ठीक। रहूंगा साइमल्टेनियसली। सर जो चीज पढ़ाएंगे ना आप उसके नोट्स इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराता है कि आप कराते हो, मतलब मेरे कने बात के लिए? हैंड रिटन नोट्स है एंड हम्म, सर्टिफिकेशन क्वेश्चंस है, मैं चाहे तो वो प्रोवाइड कर सकता हूँ, बाकी का तो ऑनलाइन ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स तो रहेगा ही है आपका ने, जैसे मैं आपका क्लासेस लेता हूँ
तो हाँ सर, रिकॉर्डिंग्स में क्या हो जाता है ना, बाद में आपको स्क्रॉल कर करके आगे बढ़ना होता है। नोट्स हो आपके पास, आप इंटरव्यू वगैरह के लिए प्रिपेयर अच्छे से हाँ, कर लेते हैं। तो मेरे मेरे हैंडमेड नोट्स है जनरली। यूजर्स स्टूडेंट्स को मैं वही प्रोवाइड करता हूँ। मतलब 200 पेजेस की मेरे खुद की टाइप करी हुई नोट्स है विद स्क्रीनशॉट्स, हाउ टू अच्छा, कॉन्फ़िगर नोट, वो जैसे वो प्रोवाइड कर। सिलेबस के पॉइंट्स है उस हिसाब से आपके नोट्स बनने हैं, मतलब यस यस, हेडिंग वाइज। हाँ एग्जैक्टली। तो 200-300 पेजेस की नोट्स ठीक है सर। की कॉपी है। सर और हर टॉपिक के बाद थोड़ा सा इंटरव्यू क्वेश्चंस के पर्पज से करवा दोगे प्रिपरेशन? मतलब जैसे एक टॉपिक पढ़ा है आपने, उस पे क्या क्वेश्चन सामने वाला पूछ सकता है ऐसे? हाँ, वो पढ़ा दूंगा ना। तो छोटे छोटे टॉपिक्स रहे तो एक 3-4 टॉपिक्स के बाद आपको तो बता दूंगा हाँ, कि जैसे क्या हमने क्या है। मतलब हम्म 3-4 दिन की क्लास कर ली, मेजर 5-6 टॉपिक निपटा दिए, तो एक दिन हम्म हम थोड़ा सा उन पे बेस्ड क्वेश्चन जो भी है 20-25-30 जितने भी हम्म, बनते हैं, है ना सर? ओके, ठीक है। ठीक उनमें से क्या ठीक क्या है पूछ सर, मैं सकते हैं। कोऑर्डिनेटर और से बात मैंने करता हूँ। सर्टिफिकेशन क्वेश्चनर भी रखे हुए हैं, जो सर इंटरव्यू के तो काम आएगा ही, और सर्टिफिकेशन इफ यू आर प्लानिंग टू डू सर्टिफिकेशन उसके लिए भी काम आएगा, वो भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको ठीक है, साइमल्टेनियसली। मतलब कि इन फ्यूचर जब हम जो एसएपी वाला होता है ना सर, ग्लोबल सर्टिफिकेट देख हाँ, के जो होता है। उसका क्वेश्चन है, उसमें से ही आएगा आपको क्वेश्चंस जो मेरे करने टर्म पे। अच्छा, मतलब अगर हम उसे देना चाहें तो उसकी भी इस मतलब इनफ प्रिपरेशन हो सकती है इससे? उसमें से 90%, 99% क्वेश्चंस आपको उसी में से आएंगे, मोर देन इनफ फॉर पासिंग द एग्जाम। हाँ सर, वो तो बहुत ही हो जाएगा सर, वो हमने क्लियर कर लिया तो मतलब फिर तो कुछ या ना कुछ ग्रोथ मिल ही जाएगी। हाँ, वो तो है, कोई नहीं, हो जाएगा। ठीक है सर, मैं उनसे बात करता हूँ कोऑर्डिनेटर से। और ठीक है। मतलब गौतम है लाइन पे अभी? गौतम भाई, हाँ जी, हाँ जी। आप सर से कुछ पूछना चाह रहे तो पूछ लो, फिर नहीं प्लान करते नहीं हैं ज्वाइन करने। नहीं, मेरा तो हो गया है, तो एक बार डिस्कस करते हैं फिर बताया फिर। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है। ठीक है सर, मैं बात करता हूँ उनसे। ठीक है, हम सक्सेस ठीक है, फैक्टर स्टार्ट करेंगे। श्योर श्योर, नो इश्यूज। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी। हाँ हाँ। अभी ना फिलहाल मैं अपना, मेरे पास ऑफिशियल लैपटॉप है, और उस पर जो हम्म ये एसएपी आप दिखा रहे थे ना अभी, ये हम्म 130 वाला, ये हम्म। इंस्टॉल है जिसमें मैं यूज करता हूँ। तो सक्सेस फैक्टर तो लिंक से चलता है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? नहीं नहीं, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। सक्सेस फैक्टर्स का एडवांटेज वही है कि आप एनीवेयर एनी टाइम शुरू हो जा सकते हैं हाँ, विद मतलब इंस्टॉल कुछ करना ही नहीं है इंटरनेट। ना लैपटॉप अगर के अंदर? अगर गूगल, अगर आपका ऑफिस अदर साइट्स का एक्सेस नहीं देता है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, जैसा कि गूगल, यूट्यूब एक्सेट्रा। नहीं नहीं सर, गूगल जीमेल वगैरह सब चलता है। सब चलता है ना, बट तो क्या है फिर कि कोई दिक्कत हाँ, नहीं होगी। हाँ मैं वीपीएन कनेक्ट करूंगा नहीं, वीपीएन में सिर्फ ऑफिशियल वर्क के लिए कनेक्ट करता हूँ, यूएस का वीपीएन। ओके ओके ओके, ठीक है। फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, डायरेक्टली आपको यूआरएल और वो मिल जाएगा। हाँ, और अपना लॉगिन किया, लिंक पे गए और फिर स्टार्ट किया, ऐसे ही हाँ, होगा? दैट्स इट। यूआरएल पे आपको सिर्फ लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर। सर बैच टाइमिंग डिस्कस उनसे ही करनी है, कोऑर्डिनेटर से? और उनसे डिस्कस कर लो, फिर वो मुझे ही कॉल करेंगे, तो वो हिसाब से मैं भी डिस्कस कर लेता हूँ। एक बार सबसे पहले आप कोऑर्डिनेटर से डिस्कस कर लो। जी सर, जी जी सर, मैं बात करता हूँ, देन हम स्टार्ट करते हैं मे बी नेक्स्ट वीक से। श्योर, डेफिनेटली। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। वेलकम।